Yes, We yes, can, yes, yes. we can, we can. Sir, so just we take some questions about on passive that are. So, sir, can I ask some questions to you, sir? With your permission, Yes. first of all, sir. Okay. Yes. Uh, we want to know Go ahead. that, sir. We want to know that, sir, what on passive mean to you now and future. We you explain the our present and the future with on passive. Over to you, sir. Okay. Okay. If before I answer your question in a way of a recap because of the network that has happened, for us to have a complete session or part of the presentation, I think the first question on introduction, like I will rush through them. My name is Pastor Paul, 360 degree from Abuja, the capital of Federal Republic of Nigeria. And today I am happy to be in India to talk about how to create awareness about unpassive. And I am a young man with family and children. So far, I got to know about unpassive exactly July 10th, 2020, through a neighbor who called my attention to it. And immediately he called, and he only, I think he became part of unpassive like within the 24 hours to that time, and he doesn't have any information, but just the name. But then, as for the fact that I have some background knowledge about an online and IT before, as coming from electrical, electronics, engineering part with some practical activities and online prior to that time, I was able to find my way around getting to the website of Unpassive, and then the quick understanding of what the product is all about, based on the fact that I have been having a kind of company that run a website, the whole web hosting and paying annual renewals of web hosting and domain name. So I have all those ideas. And also some of the programs like conferences, like summit, like that has to do with capacity building across the different institutions of the society. I have been doing that physically before. So immediately I'm on that very 10th of July around 4 p.m. And then I pick up my phone around 9 p.m. and I began to find my way through the website. And luckily, I was able to quickly convince with what I have seen that can aid what I am doing before then. And so quickly, after 4 hours intensive study and running through the whole thing, at about 1 a.m., which is on the following day, 11th of July, I made my payment as a founder. And when the person that told me saw it, he was so surprised. And what is that has convinced this a young man about something that I did not even know anything about, neither the people that he has talked to prior to me was all skeptical. And I was only laughing. So from that moment, I became a founder. And not only a founder, but a founder that wanted to know everything and want to be closer from the one. Since then, I have been so passionate. And then I did not stay as a founder alone, but I have to launch out a campaign on how more families can become part of this company, and how more people that have been wounded already from their desire to add something to their source of income, because their income can no more take care of them again. So people that are all over have been finding a way of adding to whatever they have been earning at that point. But in most cases, 97% of them will go home with loss of whatever
they invested into several opportunities before them. So in the midst of that comes this compassive that can at least to some extent guarantee something as a founder. Without if you those that lack their capacity to convince even a fly to join them in anything, will have the hope of getting something from an online opportunity is a very unheard of prior to that time. So, and it's not only getting something, but something from a place, a opportunity, a company with product that everybody needs today, that either directly or indirectly. So I just have to start moving from one place to another across Nigeria to make sure with more of families come into this company. Now, then the following questions was, what is a 360 degree? Why is it attached to my name? Why I am always attaching the 360 to my name? Because I have 100% reason to do that with everything that has to do with on-passing. So today, if I goes out to school, if I goes out to everywhere, there are many places that the 360 degree might not be attached to my name because the environment does not really tally with that. But in non-passive, the CEO, I confirm from the one that our CEO, Mr. Ash Mufara, is a 360 degree leader. So the concept of unpassive founders composition was a product of 360 degree leadership. So now in summary, whether in India, whether in Nigeria, there is a serious crisis and lack of leadership today. When we talk about leadership, we're talking about quality, effective leadership. So effective leadership is the kind of leadership that will be people's oriented, not individuals, not individualistic or personal oriented, but collective oriented. And that is, if you check out every great leaders that has ever existed before now, right from the primitive society across pre-media and every to the contemporary post-industrial societies, are leaders with the interest of people rather than their own. So those are the qualities of leaders that can guarantee a real, genuine, people's oriented development today. So I am a champion of that 360 degree leadership across youth, across family, across education, across politics, across religion, and every other facet of the society. So since I've seen it in non-passive, I did not see it only in unpassive leader, but I've seen it that unpassive products will really help me in propagating a leadership, the 360 degree leaders across the world today, so that youths and everyone will know that what we lack basically across the world today is not natural resources, nor human resources, but quality and effective leadership. The real complete influence-driven leadership. And like we know, influence is the hallmark of every tangible leadership. So we need leaders that can be what? That can be born with influence. Leaders that can be of 360 degree in terms of quality, in terms of activities, in terms of orientation, in terms of attitudes, in terms of character, in terms of communication, in terms of everything they do. And then with that, give us little time. The India will be the best place. Nigeria will be the best place. America will be the best place. The whole Africa will be the best place. The whole South America will be the best place. Asia will be the best place. And then everybody will be happy and fulfill their purpose and goals in life, their destinies in life. Okay, that is the summary.
Now, the question, the last question is saying, what will be the benefit of unpassive product, both present and future? What a great question, Patu. So it is only, and that is why we are saying that everybody that is already in unpassive community should draw closer so that you can get, when immediately we understand the benefit of unpassive product, we will never sleep. We will never rest until we get our last friends, our last family, even our enemies, those with the meek heart, with a good heart, can even go to their enemies to make sure they get them into unpassive, simply because, not because of money that they are going to make alone, but because of how the potentials embedded in unpassive products. You talk about present, here we are. Today, we are having a breach in communication. We were just knocked out, all of us, and then return back now. Why? Because of internet and or network or bandwidth challenge. Now, what about unpassive products that can make a change in this particular issue that we have had now, which is all connect? In the nearest, in few days, in few weeks, in few months from here, we will be having this same program, this same conferences, these same meetings with, even if the whole Indians can join us. The 1.3, the above 1.3 billions of Indians can join us, and we will be comfortable here, talking to ourselves, smiling together. You can be speaking your language, like today you are struggling to speak English with a tune that I will understand. But on the arrivals of unpassive O Connect, what happened? You don't need to struggle to speak English, and I don't need to struggle to speak English. You can be asking me in Hindi, and then before you know, I'll be hearing you plain black in English. Or I can even choose Hausa. That is the benefit. That benefit. There is no one that is more than that, because language is a culture. Language is part of a culture, and language is what indicates, what shows where the cultural inclination of every individual. Now you are speaking Hindi. I am hearing you in Hausa, which is one of Nigeria's major languages, and then I will be happy, you will be happy. And everybody will gather, they will hear, which is what? One, ability to hear your language, whichever language you want to talk. We have the liberty because the technology has been integrated, which is the function of unpassive with the AI, artificial intelligence. And then I can gather everybody that's around me to come and join great webinars, and they will be hearing it in whichever language they want, which is not available at this point. We are in Zoom now. We are only being forced to speak only one language at a time for effective communication. For me to be hearing you, for you to be hearing me, I must speak the one language that you must hear. But on the arrival of O'Connell shortly, such will be a history. Now, that is present. Are you talking about, you see, let's pick academy, which is for education. Presently, whether you like it or not, when I was growing up, there is a lot of Indian teachers across Nigerian institutions. But today, when you go around, you might either see very scanty, or you might not see again. Why? Because something has happened in the educational system. But with unpassive academy, Indians will be coming to teach us mathematics, because when they are teaching mathematics in English with a language that they understand better, Nigerian learners will choose whichever language they want to learn, they want to hear with. And before you know, mathematics will become like the cheapest subject to everyone.
then Nigerians can come down to India to come and what, to come and lecture or teach whichever things, languages, or they might not even want to come. They might stay in Nigeria conveniently. Indians will stay there conveniently. I will sit down here in Nigeria, in Abuja, and then begin to what, to learn any courses, anything I want to learn from the best Indian teachers with ease, with better and maximum understanding, because the barrier has been what, has been taken care of by unpassive multilingual integration in academy. What a great opportunity for our present educational transformation. Okay, now let's shift again to the another field of called politics. Today, politics rule the world. Why? Because you know, in medieval eras, in the dogmatic eras, where you have when the religious institution were controlling the economic institution, then what happened? You know, we were having a different form of leadership, like autocracy, like so many other. But today, from the Enlightenment era or to the scientific era, we have a form of government, a form of politics that is called democracy. In democracy, there is a political participation, political cultures with political parties controlling and carrying out series of activities to galvanize individual members of the society together to be part of them. All those things involve a lot of processes that has been so cumbersome before now, even till now as we are talking. In terms of, you can hear about today, we have a lot of electoral malpractices in different political settings today because of what? Because of lack of sophisticated technology that can take care of so many of those things from the beginning of the electionary processes down to the conclusion to the end. Today, as unpassive comes up with this didactic technology with artificial intelligence, you can now see that everything will be in order. The leadership from now, when a leader emerge, what happened? There's a lot, every loopholes that exists in so many governmental agencies, parastatals, and ministries will be cut, will be what? Will be reduced to minimum with the aid of human resource management, the best human resource management application called OSTAF. When that happens, what happened? Government will have a lot of money what to channel into infrastructural development. So what are we saying? The coming of unpassive product will reduce a lot of excesses lost through individual practices called maybe corruption or a lot of other. Those are the present need, present benefit of unpassive products. Now, in education, I've talked about it already. The quality of education will increase. Are you now talking about, let's look at, you know, every society today is controlled by different, the collective product of the activities that occur within the different fabrics, institutions that are made up of the society. So, but each of those institutions will be transformed through unpassive products. Today, what happened? The best definition of development so far, given by a development expert today, that is what? Three questions. So if those three questions are answered in India today, then India is best, is number one in terms of development. And if the answer to those three questions become positive today in Nigeria, then it means nobody need to ask any question of where in Nigeria, where is Nigeria in the whole world, because the whole world will know about Nigeria. And what are those questions? The question says what? What happened to the poverty? What happened to unemployment? And what happened to inequalities? So if you go back to your India now, and you look at the poverty rate, you look at the unemployment rate, you look at inequality rate, if those three indicators, those three factors, if
your answer to them is positive, then nobody, even a child, doesn't need to ask question whether India is developed or not, because definitely it must be a developed society. But if you check out, those things are still much available all around us. Because of what? Because of a poor leadership, because of poor political leaders, because of what? Poor management of economy, because of what? Because of bad and immoral product of children and youth and people from a family. Then passing through education institution, then coming to join the politics. So each of those institutions lack a quality leadership. And how do we don't passive? All of those things will be taken care of, because you will get a standard education from a well-moral individuals from anywhere across the world. But before now, you don't have choice. If you're in India, you are within the existing conventional educational systems. What happened? You don't have choice than to go to a particular institution with 4 walls of education to sit down and learn and learn and learn. Even if the person that is teaching you does not have the requisite knowledge, you don't have option. But with empathy, what happened? You have more than enough option. You can decide to say, no, I will not want to take the course of a PATLE, but I think I would prefer Pastor Paul 360 degree to teach me mathematics. And I am here in Abuja just for you to go on to the Empathy website academy and search my module, my work, and then you begin to what? You begin to learn. Correct. So that is the present. Then future is even so enormous, because those products are advancing. You know, our company will always be coming up with the highest technology. Every technology from today, from this very moment, Ampassy will be the first to bring out every emerging technology, because, you know, our CEO has told us that Ampassy and its product is a continuous stuff. It's not only within one place. So you might be the one we know now is what we know, but tomorrow more are coming, and all of them. What is the end means is to what? To aid to make the world a better place, to make individuals better set of people, to make you and I and our children that are yet to be born a better set of people than what we are having now. And it is possible with only Ampassy. So the future benefit of Ampassy can never be overemphasized, and we cannot even estimate it now because it is so huge in every facet, in every area. Is it in communication? Is it in social interaction? Today you see somebody having millions of people following him online, in social media. But now that is just the beginning. By the time Ampassy hit the world with its own social media product called Onet, oh my God, what happened? Everybody will run, and then that is when they will now begin to see the real social media community-based network. So you can see, if I am to tell you the benefit of Ampassy present and future, from now to tomorrow, I might not finish exhaustively, but here, I think I am able to have said a little that can give a background understanding to as many that would listen or currently or later. Thank you, Pat, for the wonderful questions. Thank you, sir. Thank you. Very, very well done. Thanks. Come on, Mende sir. Thank you, Pastor sir. जैसा कि सभी पैनलिस्ट को मैं बताना चाहूंगा कि जब पास्टर सर ने जो एक्सप्लेनेशन किए हैं, कि जैसा मैंने उनको सबसे पहला तो सवाल ये किया था कि आपको 360 के नाम से क्यों जाना जाता है, तो उन्होंने बताया कि मैं 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन मैं जब फाउंडरशिप के बारे में और अपने फाउंडर्स के बारे में सोचते रहता हूँ, तो तब मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मेरा एक ही साथ ध्यान रहता है और किसके तरफ से क्या कंक्लूजन निकलते हैं और क्या क्या मुझे पूछा जाता है, इन सब के तरफ मैं चारों तरफ ध्यान रखता हूँ। इस वजह से मुझे 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है।
और उसके बाद में एकेडमी के बारे में सर ने बहुत बखूबी से बताया हमको कि एकेडमी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा अपलिफ्ट होने वाले हैं, और जहाँ यंगस्टर बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वहाँ पर एकेडमी एक बहुत बड़ा मतलब क्रिएटिव होने वाला है, और उसके माध्यम से वो फाउंडर्स जो है, जितने भी फाउंडर्स है, उनके लाइफ में भी बहुत सारा चेंजिंग्स आने वाला है। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बताया है। बट ये हमारी कमजोरी है, और हमारी फाउंडर्स की कमजोरी है कि वी कांट अंडरस्टैंड। और काफी अच्छी चीज ये भी बोले है पास्टर सर ने कि लैंग्वेज लैंग्वेज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इन चीजों को जब हम लोग अपने से दूर करेंगे तो डेफिनेटली हर इंसान को यहाँ पर 360 डिग्री से पहचाना जाएगा। ये काफी अच्छा मैसेज सर के द्वारा हमको दिया गया। तो पंकज सर, अगर आपकी परमिशन हो तो सर को सेकंड क्वेश्चन रेज करें, या फिर आप बोलो ऐसा सर, प्लीज। यस यस यस, बट आफ्टर सम टाइम कुछ हमारे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले लो कंटिन्यू, ओके फिर हम सुनेंगे। ओके, कंटिन्यू सर। पास्टर सर, my second question is, how can we make aware general public about on-passive? And hello, How can? Pastor sir, my question is, how can we make aware general public about on-passive who don't know about on-passive? Please All right. tell in a short, sir, please. Okay. Now it's very, very simple. Simple. You can start it with very simple questions. You know, when you give people questions that will keep them thinking and reflecting continuously, you make them curious. They want to know. Now look at the question this way. Now, when you see a friend, or you pick up your phone and send a text message to a friend and say, bros, friends, guy, hello, do you want to make money without talking to anybody? Because today, everybody, everyone, average adult today is aware of has experience of one form of referrals or the other. No, when you are talking about referral, when you go to a pharmacist to buy a medicine, what would they tell you? They tell you, bros, please, please try to direct people to my pharmacy so that they will be aware of here. Okay, one. When you go to a restaurant to eat food, new restaurant, what would they be telling you? They'll tell, bros, look, anybody that you know around here that is hungry, please let them know that there is a restaurant here. Okay. Now, when you go to barbing salon to barb your hair, what do happen? They need you to direct your friends, people to that place. So every business today, every survivor today depends on people bringing people, which is called customers. But today, where we are in a world where you can open your shop, full it with every goods and services of your choice that people need, and then your own is to go and sleep somewhere. Who will not do business? Who will not like that kind of business? A business that you open a store, you don't need to look for people that will be coming to buy your goods from left and right before you'll be able to pay your annual rent. Because if you do not do that, your rent will, before you know, the next 12 months, 12 calendar months, the one you have paid as what has expired. And you will not have another money to pay for rent. Talk more of feeding your family. Talk more of recovering your capital to go for more. That has been the challenge of businesses today, whether online or offline. There are people that are not designed to convince even a baby. So those set of people, they cannot make anything today, whether online or offline. But here come opportunity that can aid such people. So everybody will want to be part of it. When you have them for selling on passive or sensitizing people about on passive is as simple as ABC. Reaching out to your friend and say, oh boy, no,
Will you not like to be part of something that everybody will use? Ah, they will say, ah, what is that thing? What is that thing? Ah, where is it? Please let me know, let me know, let me know. I want to see it. And then you begin to tell them, ah, look at this company, look at what they are coming with. Today, you have GSM, when you have 500, in today now, 500 naira, which is our own currency. You have 500 in your pocket only. You are hungry. You don't have airtime in your phone. What will you do between the airtime and food? You buy to me, I will buy airtime. Because if I buy the airtime, I will have call credit to call somebody or send text message to somebody to ask for one business or the other, or even to ask for money. But if I use that 500 and eat food, I don't have anything in my phone. I cannot communicate. I cannot look for anybody. I cannot look for more money. So you cannot see that the phone is more important than food, which we call opportunity cost in economics. So that is what unpassive products are all about. So with those kind of products, it is only, the only thing we need is to open our mouths with a better understanding of what this company is all about. Somebody like me, who took 4 hours to study what unpassive is, what the company is all about in July 2020. So with that 4 hours, you can see that it is not difficult for me to convince anybody about unpassive. So what we need, the basic number one thing that you must know, that you must have, if you want to sensitize, if you want to rescue families, if you want to rescue friends, if you want to rescue neighbors, if you want to rescue colleagues, if you want to rescue your old schoolmates, if you want to rescue anybody at all, number one thing that you need is what? The better knowledge of what unpassive is all about and its product. That is all you need. With that, anybody, creating sensitization is as simple as ABC, because by the time you put up the question, do you want your children to have a better education? Today, here in Nigeria, parents can deny themselves of clothing, deny themselves of better shelter, deny themselves of a comfort of life to make sure they train their children from the basic, from the primary to the tertiary institutions. I knew a lot of them, including my own self. So now, how can you now say that for every family that you put up a question to mother and father, parents, that, do you want your child to get a better quality education from America, from Asia, from Europe, from everywhere? They will tell you, how? What is it? What is it? What is that? What is that? They will be they want to know. And then you say, okay, look at this company. Your child cannot be in your room and study in India, and study in America, and study in Europe, and study anywhere. Do you know the risk of sending children to study in education tourism? So many of our children were stranded in Ukraine recently when the conflict started. You see the implication? Some of them, some of the students might have been killed. Why? Because of what? Because something better, like an unpassive academy, is not available. And that is why. But from 2023 onwards, such avoidable disasters will be definitely minimized, because I cannot be sending my child to anywhere when what the child is looking for, he can achieve it right in my room, right in my house. I cannot. So even today, because of a lot of social vices like autism, like so many other things that terminate, that get children corrupt from the original trainings that they have gotten from family. Now, so many parents are even scared of sending their children to boarding school. Currently, that is even within the same country. So talk more of going to another country that you don't know the background of their cultural orientation. So with unpassive, all of that can be taken care of. So you want to sell unpassive to the family, go with education.
You want to sell on passive, want to sensitize on passive to politicians, or go with Oconnect, or go with Onet, because they want a lot of followers on social media in a sophisticated, most advanced, most AI-driven social media. Oh, what politician will not want to subscribe to Oconnect immediately? And then when they subscribe to Oconnect, what happens? They have reason to meet with the caucus. Now, what is the population of Nigeria today? Over 220 million people. Each political parties we want to gather 15, 20, 30 million votes in an election. So how do they achieve that faster? Electronically, with virtually online, they will have the only platform that can guarantee the meetings of 20 million, of 30 million, of 100 million, of 500 million people in a meeting, one-on-one, face-to-face, without language barriers. In Nigeria, we have 3 major languages today. There are other languages that doesn't understand any of the 3, but then they are politically inclined. Their political participation, the political culture were high. Now, but they might be denied because of lack of communications. But with the comings of Oconnect, what happened? Politicians can sit down anywhere you are across the country. You can be part of that meeting, and you understand. You know what that meant? It will translate to more number of votes, more political participation, more voting apathy, more political cultures will be enhanced. Which politicians will not want to be part of the passive? Quickly, they will rush, go to the education. Apart from the families and the children educational transformation through knowledge transfer using academy, what about our teachers across boards? They will not have a better teachers in Indians, no matter how they are well paid. They might not be enough. It might not be enough because the cost of living, the economic depressions, and every other things are increasing daily. So now, as they are increasing, the proportionate relationship between the source of income, the capitals, and the what, and every other services they need today is not the same thing. So in that case, what happened? What they are getting is not enough. Now they have a better means to earn more money through academy without paying anything. As tutors, as teachers, you are not paying anything. Your own is to provide services to learners, and then you'll be earning a bunch of money. So tell me, which of the teachers from the primary to tertiary institution, whether conventional or vocational educations, will not want to be part of it? Very, very simple. Just get your understanding, clear understanding, and then you are okay. Everybody around you will become part of Okay, sir. Thank you very much, sir. Here is Geet ma'am with us, and I would like to call Geet ma'am. Please, I think you listen and you hear Pastor sir. Can you explain, ma'am, what is Pastor sir says? Hindi. What is? Geet Anand ma'am, No. welcome. I want to ask Geet ma'am, please. You want to ask me what? Geet Anand. Sorry, Geet sir. Anand Sorry, sir. Sorry, Geet Anand sir. ma'am with us. तो शायद वो सुन नहीं पा रही होंगी. ओके. जैसा कि पास्टर सर ने बताया हमको कि अगर गीत मैम सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, गीत मैम. ओके, नो प्रॉब्लम सर. जैसा कि हमने सवाल किए थे पास्टर सर से कि हाउ कैन वी मेक अवेयर, हम मतलब जो आम पब्लिक जो है उनको किस प्रकार से अवेयर करें अबाउट ऑन पैसिव.
ताकि वो आने वाले समय पे हमारे प्रोडक्ट को ले सके और उससे अचीवमेंट कर सके। तो उसके बारे में काफी अच्छा सजेशन मास्टर सर ने दी है कि सबसे पहले तो हमको उनको अवेयर करने से पहले ये बताना पड़ेगा कि आप पैसा बनना चाहते हो, मतलब अगर चाहते हो तो देन उस बाद में ही हम सारी चीजें उनको बता पाएंगे। अदरवाइज जब तक कि हमारी पैसा कमाने की इच्छा नहीं होगी तब तक के हम उनको बता के भी कुछ मतलब नहीं होगा। इन शॉर्ट यही पास्टर सर का सवाल था। अभी सवाल तो बहुत सारे बनते हैं बट समय यस के नजाकत को समझते हुए मैं ये माइक को पंकज सर के तरफ हैंड ओवर करना चाहूंगा। अगर कौशिक सर थैंक यू। अगर कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहे तो वेलकम कौशिक सर। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। टाइम के अभाव की वजह से हम ज़्यादा कुछ सर ने जो सर का जो एक्सप्लेनेशन था A1 पूरा का पूरा 360 डिग्री में एक्सप्रेशन था। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सर। हम इसको एक्सप्लेन अपने हिसाब से फाउंडर्स के लिए कर पाएंगे बट टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास अलग दूसरे भी पैनलिस्ट है। ओवर टू पटले सर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम सिर्फ पंकज सर, यस पंकज सर नेक्स्ट टाइम सिर्फ पास्टर पाल सर को ही बुला के हम लोग पूरा होल सेशन उनको देंगे। ये यस हम्बल यस रिक्वेस्ट हम लोग पास्टर पाल सर से करते हैं कि एक फुल यस डे हम लोग यस सर को देंगे। यस यस थैंक यू यस सर। यस राजू सर को वेलकम। Yes, थैंक यू। great, पोस्टर पाल सर, बहुत बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। हमारे पास पटले सर, पीएम हसन कोया यस इंडिया केरला से एक हैंड रेस है, तो हम इनवाइट करते हैं हसन सर, आप आइए। वेलकम। Thank you. वेलकम सर। यस Thank you, sir. welcome sir, welcome sir. Thank you. I'm glad and happy to be वो here. वीडियो ऑन करो ना, हमारा दिल नाराज हो रहा सर है। वीडियो सर वीडियो आप सर वीडियो ऑन नहीं कर सकते। काफी लोग मतलब वैसे मतलब बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं तस्वीर भेजूंगा आपके। कोई सोया हुआ है, कोई बनियान में, कोई मतलब ठीक कंडीशन में नहीं है। इस वजह से हमने वीडियो ऑफ रखे। सो सॉरी पीएम हसन सर, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हम वो नहीं कर पाएंगे वीडियो ऑन। तो थैंक यू सर। सिर्फ सर का वीडियो ऑन, सिंगल सर का वीडियो ऑन करो। नहीं हो पाता ना, नहीं you. हो को होस्ट बना देता हूँ मैं सर को, उनका होस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, आप को होस्ट बना आप दीजिए। अपना उनको वीडियो खुद को यस आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। पीएम हसन सर, आप जी यू कैन स्टार्ट हाँ वीडियो ओके, ऑन। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। Hello. Thank- Okay, yeah. ओके ओके, यस वेलकम ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली। सर, Thank Yes. you. Fine. Thank you. welcome pastor sir. Your energetic performance and today's speech is very well. I'm glad you glad me and our team. Your very energetic presentation. Thanks a lot. Thanks a lot. I am appreciate you. Thank you, Pastor Paul. Thank you. 360 degrees. Thank you. Yes. So, Okay. So yes, Pastor Paul sir, I will talk to Hindi, our mother language. Please listen you and your Nigerian person. पहले तो मैं कहूँगा सभी नाइजेरियंस जो हमारे सिस्टम पे आए, हमारे पार्टिसिपेंट पैनल में आए, उनका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अभी आपने जैसे सुना हमारे पास्टर पॉल 360 डिग्री को, तो आपको उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चला होगा। इज अ बॉडी लैंग्वेज या दिस एनर्जी, यानी आप समझ सकते हैं हम ऑन पेशिव के कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। हम ऑन पेशिव इज द वेरी बिगेस्ट प्लेटफॉर्म and biggest platform, and S Mufara is the salute, S Mufara is the genius, God, every word is the
ब्लेसिंग उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, ऐश मुफारा, जिन्हें जो हमारे लिए काम किया है इंडिया में, हमारे हैदराबाद में जो हमारे आईटी सेक्टर के टेक्निकल सेशन में जो हमारे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, इनके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। आप सभी को पता है कि हम कितने करीब है विनर और विजेता के। वी आर इन इट टू विन इट। वो टू सोनल पाल मैम। Yes, to Yes. win it. Yes. Okay. यार Yes, thank you Over to so Sonal ma'am. much. Thank you, Yeah, sir. thank you, Pastor Sonal. Paul. Please, Thank 16 degree. you. Thank you. Thank, Yes, thank God yes, you, yes, so Sonal. good, sir. आपका गीत presentation मैम। बहुत अच्छा रहा। Yes, गीत आनंद मैम का हैंड रेज है। yes, 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 Thank इस yes, समय yes, yes. हमारे बीच में गीतानंद मैम है, तो यू मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम Thank मैम। you, Sonal. Welcome, Thank you, welcome, Sonal. ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you, I sir. think, Pastor sir, thank you so much. thank you. I think Yes. there is one hand up. One hand is up. Yes. Welcome, Geeta ma'am. Welcome, welcome. Yes. What? Is any other questions, or I am free to go? Am I audible? Am I audible, Yes, Pankaj yes, sir? yes, 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 sir. yes, यस yes, yes. क्लियर Thank क्लियर है you, thank you Continue, ma'am, everyone. continue. Thank you everyone for inviting me. Pankaj sir, Sona ma'am, Raju sir, Lokesh sir, Kaushik sir. I'm sorry if I forget anyone's name. Especially thanks to Poster. Warm welcome to you, our Indian webinar. We love to hear you. Sorry, I can't hear you for the last few time because I was not available here. We are so delighted that you are here today with us. Paul, are you listening me, getting my voice? Yes, ma'am, loud and clear. You say, yeah, we can hear you. Yeah, I'm asking Yes, yes, Paul. yes, ma'am, loud and clear. Yeah, Pastor, are you listening me? I am so thankful to you from all our Indian community, all Indian Pacifians. You are here with us. Thanks for your precious time. Wonderful sharing. Little bit I know about you, how much I listen from you. I am so happy to see you here. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. And come again and again with us. We love to hear you again and again, because all Thank of us are you. finally on Pacifians. So only I Yes. can say that. Thank you, Pastor. Thank you so much. Thank Thank you, you. thank you, thank you. Unpassive is the one family, and the challenges, the problem that Unpassive is coming to solve is the same thing everywhere. We're in the same India, the same Nigeria, the same all over. So we are happy for this wonderful community that our able and 360-degree leader, CEO, Yeah. has been able to put up for all of us. And we will very soon, I will be in India live, and we'll be having this session live, not virtual, because we'll have enough, whatever it takes for us to come together, we'll have more than enough with the aid of Unpassive. So we'll be coming, I will be coming to India, you'll be coming to Nigeria. Then, Yeah, yeah. yes. So now, we before I leave, I want to try to encourage all of us here leaders that our mouth should not close, because if you have saved one person from a family, you have rescued, you have changed the life of that family, you have changed their cost of living forever. So if your mouth is closed, it means you have closed the destiny of families. If your mouth is closed, you have closed the destinies of communities. So the only thing we need to do, those of us that have understood what this company is all about, our mouths should be widely open. Talk to anybody, forget about response from the negative response from anyone, but definitely there are many that will respond positively, and you will change their life and that of their generation forever. And I can see the faces of all of us here as those that will not close their mouth, even as we go to the next phase in our company, the face of customers and resellers. Customers will become great. Resellers will become great.
because any businesses that anybody is doing, that business will enjoy transformation through unpassive products. So that is what? That is customers. Customers will explode. Then resellers. What about our youths that are unemployed? What about our able bodies, young men and women with knowledge, with understanding, with energy, that are looking for something profitable, something productive, something good to do, legitimate to do, but they did not get anyone. Opportunity is coming for them to get one, but they will never get. How can they get when they did not know about unpassive? So how did they know when you did not tell them? How did they know when nobody's mouth is open to talk? Because everybody that feeling, after I am inside, I don't need anybody. No. We should open our mouth and tell them so that they will come in as resellers, as customers, and then their lives will be better. Absolutely. Then the social vices, the criminalities will reduce in India and even in Nigeria. Thank you. सर ने कहा कि हम नाइजीरिया और इंडिया हम एक दूसरे से मिलेंगे और हमारे मुख में एक ही वर्ड होगा, एक ही वॉल्यूम होगा, ऑन पेशियो। हम अगर अभी हमें किसी साथी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर रिटेलर और कस्टमर बनके हमारे साथ जुड़ेंगे। 101% वो यहाँ हमारे साथ सहभागी होंगे। तो हम पास्टर पॉल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और सभी हमारे आए हुए पैनलिस्ट का भी मैं दिल की गहराइयों से सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारे बीच में हमारे कुछ साथी हैं, तो समय को देखते हुए से हमारा समय युवन हो चुका और हमें क्षमा चाहते हैं कि हमारा एक बार जो सेशन बीच में ब्रेक हो गया यानी टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें जो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके लिए मैं हमारे टेक्निकल से इश्यूज होने की वजह से हम यहाँ पे दोबारा हमारी जो संख्या दिख रही है वो कमी है, बट उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि यहाँ पे वेदर का बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं एक बार हमारे गायत्री जोशी रवाडा से, ये हिंदी बोलती हैं, हिंदी में आप वेलकम गायत्री जोशी मैम, वेलकम। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार मैम जी। नमस्कार मैम। हेलो मिस्टर पास्टर सर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। I am fine, thank you. Welcome, Gayatri. You're welcome. Your presentation is very good. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, ma. आज की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छे से सर ने सबको समझाया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पूरी दुनिया एक हो रही है, हम पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एक हो रही है। सभी लोग सभी जगह से, कोई भाषा का कोई भी नहीं है, मैटर ही नहीं है, बस एक फैमिली बन रही है ऑन पैसिव की। वो बहुत बढ़िया है और ये जर्नी बहुत बढ़िया लग रही है और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। हमारे बीच में हमारे मेंटर हमारे साथ बने हुए हैं सुधीर महाजन जी, अगर आप हैं तो वेलकम, आपका वेलकम है। कम शब्दों में आप अपनी बातों को रखें। वेलकम। Okay, I think I'm free. Yes. I'm free to go, right? Yes. Thank you sir, thank you. You can go. आप जा सकते हैं, आपके पास समय की बहुत प्रॉब्लम समस्या है। ये वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू पास्टर पॉल, थैंक यू। तो हमारे बीच में महाजन सर, आप सुन पा रहे हैं? हमारे बीच गिरीश बागड़े जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं विशेषकर हमारे
जो गीत मैम और हमारे साथ एमडी के अफसर भी जुड़े थे, उन्होंने समय मांगा कि सर मैं थोड़ा काम में तो जा रहा हूँ, तो थैंक यू। आप हमारे सेशन पे आए, ऐसा ही प्यार बना रखे, आपके आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत है। तो थैंक यू गिरीश बागड़े सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो तवज्जो दी है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर में, किंग टाइगर टीम के प्लेटफॉर्म के ऊपर में स्पेशली हमारे जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर पोस्टर पाल सर, उन्होंने जो कुछ भी पानकेज कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या होने जाने वाला है, अभी फ्यूचर क्या है, अभी कंटिन्यूस में क्या है और आने वाले फ्यूचर में क्या रहेगा, उसके बारे में जो एनर्जेटिक जो अपनी भावनाएं रखी, वो एकदम देखने लायक। और सही में वो कितना एनर्जी उनके अंदर में भरी हुई थी और कितने जोश पूर्ण उनका पूरा स्पीच रहा, वो एकदम देखने लायक था। और पोस्टरपाल सर का जोश देखने के बाद में हमारे किंग टाइगर टीम के जनक मिस्टर पंकज पटले सर का भी जोश बढ़ गया था एकदम। वो भी शब्द उनको मिल नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बयान करूं करके। लेकिन जो भी उन्होंने बात रखी है वो भी आपकी भी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी सर। आपको भी सैल्यूट सर, थैंक यू, थैंक यू। और ऐसी इसी तरीके से हमारे लुकेश मेंढे सर ने जो आज उनको 2 क्वेश्चन जो राइज किए थे, वो क्वेश्चन भी जल तारीफ पे काबिल थे। और राजू छूटे सर है, सोनम पाल मैम, उन्होंने भी अपना अपना रोल बहुत जबरदस्त निभाया है यहाँ पे। सोनम पाल मैम का भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और कौशिक पटले सर ने वापस से आज हमारी नाव की जो कश्ती है वो संभाली, उसके लिए कौशिक सर को भी मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूंगा कि हमारा जो हम हिंदी भाषी है, हम इंडियंस, और हमने एक प्रयास किया था कि फॉरेन के लीडर लोगों को हम बुलाए। हमारे कुछ इंडियन फाउंडर्स ने नाराजी के भाई इसमें जिसको इंग्लिश समझती होगी वो ही उन्होंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे करके। ऐसा नहीं है भाई साहब, आज आप जो जिस पोजीशन पे हो, आने वाले समय पे आपकी पोजीशन चेंज होगी, आप भी फॉरेन जाओगे क्या वहाँ हिंदी मराठी में बात करोगे, वहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। कोशिश करो, सीखो इंग्लिश बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि एकदम ग्राउंड छोड़ के चले गए, ये जरूरी नहीं है सर। हम उसी दृष्टिकोण से हमने प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोगों ने भी स्पेशली जो बेसिकली बांग्लादेश के हो या नाइजीरिया से हो या फ्रांस से हो, हमने जो लीडरों को बोला है उसके पीछे का हमारा रीजन वही है कि हमारे को उनकी भावनाएं समझना चाहिए, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज हमको समझना चाहिए, और जहाज से हम भी इंग्लिश में बात करना हम सीखे करके। तो ये हमारा प्रयास था, लेकिन आप लोग इसको गलत समझ गए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पंकज सर ने क्षमा मांगा ही है, क्या ऐसा नहीं होगा। अभी का आज का जो वेबिनार इंग्लिश में हुआ है वो आपको हिंदी में मिलेगा, उसके हम लोग ट्रांसलेट करके आपको पूरा रूपांतरित मिल जाएगा। तो ये चीज थी सर, दूसरा कुछ नहीं। और आपने मुझे शायद बोलने थैंक के लिए यू, जो समय दिया थैंक उसके यू, लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी, हम भारतीय हैं, भारतीय मुल्क, हमारी मातृभाषा हिंदी है। बट आप जैसे हमारे गिरीश बागड़े जी ने कहा कि हम किस लेवल पे जाने वाले हैं, अगर आप अपना नजरिया को चेंज करते हैं तो कोई हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, नाइजीरियन हो, अरेबियन हो, फ्रांसीस हो, इन फ्यूचर आपको सारी लैंग्वेज का एक ही तोड़ होगा, ओ कनेक्ट, ओ कनेक्ट, ओ कनेक्ट, ओ कनेक्ट। तो हमें जब हम विदेश जाएंगे, जब हम वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा असर जो है वो बुरा पड़ने वाला है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, लिसन इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। बट अगर आपने कुछ गलत समझ लिया है तो नो प्रॉब्लम, नो इशू। आप हमें बाद में, आज नहीं बाद में हमारी तारीफ 101% होगी, क्योंकि हम इंग्लिश पे भी जाएंगे और हम छोटे छोटे फाउंडर्स के बीच में भी जा रहे हैं और छोटे छोटे फाउंडर्स को भी यहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैं तो 2 शब्द मिस्टर बाजीराव तरोनी जी, आपका भी वेलकम करता हूँ। कम शब्दों में बोल के हम अपने सेशन को यहाँ पे विराम देंगे। वेलकम बाजीराव तरोनी सर।
क्या बाजीराव सर सुन पा रहे हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे बीच में हमारे पैनल पे योगेश गोविंदवार सर, आपका 2 मिनट दो शब्द कीमती आप यहाँ बोले, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज का सेशन सर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। सबने अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से रखी, और स्पेशली पोस्टर सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो हमारे इस वेबिनार में आए और कंपनी के बारे में, ऑनटेस्यू के बारे में जो भी नॉलेज उन्होंने शेयर किया बहुत ही एनर्जेटिक था। हेलो और यस यस हेलो सर, आवाज आ रही है सर? तो आज का सेशन सर बहुत ही अच्छा हुआ, एनर्जेटिक हुआ। संख्या थोड़ी कम है एक्चुअली, क्या टेक्निकल इश्यू होने की वजह से सारे लोग बाहर निकल गए थे और वो दोबारा जुड़ नहीं पाए, लेकिन कोई इश्यू नहीं है सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। ओवर टू पंकज सर। थैंक यू। अब हमारे बीच में, हमारे साथ में सभी साथियों को अगर जो छूट गए होंगे और नहीं बोल पाएंगे तो उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगर के कोई हैंड है तो प्लीज आप हैंड रेज रख सकते हैं। अच्छा, ये बाजीराव सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद नहीं है। तो थैंक यू। हम यहाँ पे समय को सर देखते मैं हुए हमारा हेलो सेशन एंड हो चुका है। हेलो यस यस, लोकेश मंडल जी बोलिए। हाँ 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 सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 2 मिनट बात करके कुछ शेयरिंग करके इस सेशन को एंड करना चाहूंगा। यस 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 यस, अगर पूरे वेलकम। सभी पैनलिस्ट की अगर परमिशन हो तो सर वेलकम Yes, बोलिए, sir. वेलकम। Yes, sir. Welcome. वेलकम थैंक यू वेलकम। थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका सेशन, आज का सेशन जो है वाकई बहुत माइंड ब्लोइंग रहा। एक्चुअल कैसा ना, आज के पैनलिस्ट में मेरा भी नाम था, बट कुछ इंसिडेंट की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। सो मैं अपना शेयरिंग नहीं पाया, बट मैं अभी विद इन 2 मिनट्स में अपना शेयरिंग रख के इस सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। मतलब सभी पैनलिस्ट के ओर से तो एक छोटा सा स्टोरी मैं आप सभी लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा सर। स्टोरी ऐसा है कि एक रोटी की स्टोरी है। रोटी बनती कैसी है, रोटी बनती कैसे, इसके बारे में अगर हम लोग सोचे तो एक आम आदमी या आम कोई भी इंसान हमको बताएगा कि आटा लिया, उसको क्या बोले भिगोया, उसकी लुगदी बनाए और फिर रोटी बन गई, ऐसे ही बोलते हैं। बट वो जो स्टार्टिंग से अगर उसको हम लोग देखते हैं, उसका बिलोंगिंग ऑन पैसिव से है, उसको ऑन पैसिव से जोड़ के देखना तो आपको पूरी चीजें समझ में आएगी। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसको समझने की कोशिश हर किसी ने करना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि रोटी बनती कैसी, इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिकली और शुरुआत से अगर देखें तो जैसे ही किसान पहले, सबसे पहले तो जमीन को तैयार करता है, और जमीन को तैयार करने के बाद में उसमें गेहूं डालता है। गेहूं डालने के बाद में उसमें खाद पानी सारी चीज देने के बाद में, जब कुछ समय के बाद में वहां से हल्के हल्की जब वहां से पौधे निकलना चालू होता है, पौधे निकलने के बाद भी अभी तक की रोटी नहीं बनी हुई है, रोटी नहीं बनी ये सबको पता है, उसके बावजूद भी उसमें और सिंचाई करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ डालते रहता है, उसको वेट एंड वॉच करता है। उसके बाद में वो पौधे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, बढ़ने के बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि उसको कुछ समय के बाद में उसमें फिर छोटी छोटी बालियां लगने लगती है, अभी रोटी बनी नहीं है, उसके बावजूद भी वो इंसान वेट एंड वॉच कर रहा है, वो किसान वेट एंड वॉच करता है। वेट एंड वॉच करने के बाद में और कुछ समय के बाद में जब कुछ हवाएं चलती, कुछ पतझड़ का सामना करते हैं, वो बालियां लहराती है, फसल निकलती है, निकलने के बाद में अभी भी रोटी बनी नहीं हुई है। जब फसल कटती है, फसल कटने के बाद में जब उसको मशीन में डाल के जब गेहूं बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद में देखो तो अभी भी रोटी बनी नहीं होती है। जब गेहूं अपने घर तक के पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद में हमारी माँ बहन बीवी जो भी है वो उसको साफ करने के बाद में, जब सबसे पहले तो उसको एक साथ मशीन में नहीं डाला जाता है, तो उसको सबसे पहले स्टोर करने के बाद में कुछ एक छोटा सा डिब्बे में या एक कोई भी इसमें लेके हम लोग उसको थोड़ा सा निकाल के हम लोग आटा चक्की पे लेके जाते हैं। चक्की पे ले जाने के बाद में हम लोग वो चक्की वाले को बोलते कि भैया इसको पिसवा के दे, अभी रोटी बनी नहीं है। और जब वो आटा पिसवा के हम लोग घर पे लेके आते हैं, घर पे लेके आने के बाद में जब वो आटे को हमारी मम्मी बोलो
बहन बोलो या हमारी मिसेस बोलो, जो भी है, वो आटे में पानी डालती है, उसमें थोड़ा सा नमक डालती है, उसको बहुत बढ़िया उसके साथ में झगड़ा करते हुए वो आटे को गूंदती है। गूंदने के बाद में छोटी 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 गोलियां बनाती है। अभी भी रोटी बनी नहीं है। और जब वो गूंदने के बाद में, जब उसको बेलने के बाद में, जब वो तवे पे डाली जाती है, अभी भी रोटी पूरी बनी है। जब दोनों साइड से परती जाती है, परतने के बाद में उसको छोटे छोटे फफोले जब निकलते हैं, और फफोले निकलने के बाद में जब वो रोटी फुल के खड़ी हो जाती है, उसके बाद में वो उसको थाली में परोसा जाता है। उसके साथ में छोटी सी सब्जी देने के बाद में जब हमारे मुंह में जब वो निवाला जाता है, रोटी बन के अब तैयार होती है। एक छोटे से एक निवाले के लिए जब हमको इतना समय वेट एंड वॉच करना पड़ा, तो हम लोग ये क्यों सोचते मेरे भाई कि ऑन पेशी हमारे को इतने जल्दी ये सारी चीजें देना चाहिए। मिस्टर पॉल सर का काफी अच्छा मैसेज आज हमको जो मिला है कि जो भी इंसान 24/7 एंड साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी इंसान का ध्यान रहेगा उसको ही 360 डिग्री बोला जाएगा। और शायद यही एक रीजन है कि पॉल सर को जो ये एक उपाधि मिली है कि उनके नाम के पीछे जो 360 लगा है, ये एक रीजन हो सकता है। और मैं इस मंच पे एक चीज और दोहराना चाहूंगा कि जैसा आज हमारे पैनल पे जितने बड़े बड़े जो हस्तियां आ रही है, वो उनके ओन लैंग्वेज से ही आते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, पहल करें। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, बट मैं अपने बात को पूरी करे बगैर तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। जब फॉरेन का कोई बंदा अगर हमारे पास में आ रहा है, क्योंकि पॉल सर अभी है ही नहीं, हम लोग सभी है इंडियंस है और सब फैमिलियर है, इस वजह से मैं ये सारी चीजें बोलना चाहता हूँ कि जब कोई भी बंदा अगर हमारे पैनल पे आ रहा है, और जब उनकी उसके ओन लैंग्वेज में अगर हमारे साथ में बात करते हैं, उनको हम लोग समझने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, तो घर मैं मराठी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं कन्नड़ा हूँ, मैं तेलुगु हूँ, जो भी लैंग्वेज मेरा है, वो लैंग्वेज से मेरे को पहचानना चाहिए। ये मेरा एक इंटेंशन है, और ये ताकत सिर्फ और सिर्फ ऑन पे शिव के अंदर में है, और ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसी वाणी के साथ मैं अपने आप को इस जगह पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू स्पेशली पंकज सर कि आपने मुझे समय दिए। थैंक यू सर, और टू पंकज सर। थैंक यू सर। आपने जो छोटी सी बातों में बड़ी चीज बताई है, वो मतलब मायने रखता है। वाई मतलब लोग सोचते हैं कि वन पेशी अभी क्यों नहीं आ रही है, तो आपने एक उदाहरण पेश किया। एक छोटे से काम करने के लिए हमें बहुत समय लग रहा है, तो हमारा ये वर्ल्ड वाइड जो हमारा ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें जो मिल रही है, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। समझे सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे हम छोटी मोटी चीजें नहीं करने आए। हम एक प्राउड फाउंडर्स हैं, हम एक बड़े लेवल के व्यक्ति बन चुके हैं। हम सभी प्राउड फाउंडर को क्यों नहीं समझते हैं कि हम ऑलरेडी बिलियनियर बन चुके हैं। बट अभी आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। कई लोगों का सवाल आता है कि सर हम मरेंगे तब पैसा आएगा क्या। साथियों, आपकी सोच ही तो आपकी सोच जैसी होगी, जैसे आज हमें फर्स्ट ऑफ ऑल को सुने, उनकी 360 डिग्री का मतलब आप समझ सकते हैं। वो रात दिन एक कर दिए हैं। और हम जैसे अभी आप गीता मैम क्यों आए, गीत मैम क्यों आए, गायत्री मैम क्यों आए, बस उन्हें कुछ कहीं भी जाके सीखना है, जैसे कि हम भी सीखते हैं। प्लीज माइक किसी का ऑन है, माइक को म्यूट कर ले। माइक, सॉरी, हाँ सॉरी। तो ये हम क्यों किसी सेशन में जाते हैं, क्या हमें हमें न्यूज नहीं मिलती है? हमें भी पूरी न्यूज मिलती है। हम सीखते हैं, हम सीखकर सिखाना चाहते हैं। तो हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हम ऑन पेशी के प्राउड फाउंडर है। जो भी हमारे 14 लाख प्राउड फाउंडर बने हैं, 800 करोड़ की पॉपुलेशन पे मात्र 0.001% भी कहूँ तो बहुत कम है, क्योंकि इतने कम लोगों को फाउंडरशिप मिली है। आप लकी हैं, आप अपने आप को गर्व महसूस करें। और समय हो चुका है ज्यादा, मैं समय कीमती है बहुत सभी का, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो मैं थैंक्स करता हूँ मेरे साथ जितने कोस्ट पैनलिस्ट आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर गीत मैम, गायत्री मैम और हमारे जितने भी नाइजीरियन साथी हैं, उनका वेलकम। और हम यहाँ पे अपना स्लोगन के साथ हम अपने सेशन को एंड करेंगे, सभी को पता है। तो
सभी अपना We माइक को अनम्यूट कर are सकते so हैं। सो इनिट टू विन We are so गर्व in से it to win कहते it. हैं कि हम मॉर्निंग गर्व गर्व से से कहते कहते हैं हैं कि गर्व से सुंदर कहते है। वी हैं आर मॉर्न पे सो पे शो इन करते हैं इट किसी के प्राउड